Buddha against Asia. Yes. So, Saira, can you hear me? Yes, sir. Okay, beta. Beta, here are 8 hypotheses. 8 hypotheses guide us to build models according to your research problem. अब हमारे रिसर्च प्रॉब्लम में कुछ इकोनॉमिक वेरिएबल CO2 मिशन कॉन्टैक्ट कर रहे थे, डेवलपमेंट वेरिएबल CO2 मिशन कॉन्टैक्ट कर रहे थे, कुछ एनर्जी वेरिएबल। तो 8 हाइपोथेसिस को हमने फॉलो किया। देन वी बिल्ड 4 मॉडल्स। कैन यू सी ऑल ऑफ यू 4 models? First one is CO2 emission is a function of economic growth. Forest investment, agriculture product. This is the first model. So, in other words, 3 hypotheses. In 3 hypotheses, we discussed that economic growth, forest investment, and agriculture products are significantly cause CO2 emission. So, 3 variables were discussed in 3 hypotheses. We added 3 variables in 1 model. Economic growth is different, so it causes CO2 emission, forest investment causes CO2 emission, agriculture product causes CO2. Now, पॉजिटिव कौन सा काज कर रहा है, नेगेटिव कौन सा काज कर रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ पॉजिटिवली काज कर रही है, फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट नेगेटिव CO2 इमिशन को काज कर रही है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पॉजिटिव काज कर रही है। अब हमारे पास सेकंड मॉडल में हमने क्या किया? सेम 3 वेरिएबल्स ऑफ द फर्स्ट मॉडल वी एडेड 2 एनर्जी वेरिएबल्स, कोल, आयरन कंजम्पशन, which positively cause CO2 emission. Third model, we add 2 social development variables, urbanization and urban income, in which we discuss that how do urbanization and urban income significantly cause CO2 emission. In the fourth model, we took all variables and discussed that how do all variables cause CO2 emission, holding other variables constant. Holding other variables constant. Other economic variables, other energy variables, other social development variables, all variables constant. Just within a given framework, we discuss that how do these variables affect CO2 emission. That is the point. Okay, you are getting the point. Reply please. Yes, reply please. जी बेटा, अंडरस्टैंडिंग हो रही है आपको? Yes, sir. हमने कैसे मॉडल बिल्ड किए? फॉलोइंग द हाइपोथेसिस। जो हमारे हाइपोथेसिस थे, उन्हीं हाइपोथेसिस को फॉलो करके हमने 4 स्टेप्स, 4 मॉडल बनाए थे। पहले में इकोनॉमिक वेरिएबल ऐड कर दिए, सेकंड में इकोनॉमिक प्लस वेरिएबल ऐड कर दिए, थर्ड में इकोनॉमिक प्लस सोशल डेवलपमेंट वेरिएबल ऐड किए, और फोर्थ मॉडल हमने सारे वेरिएबल ऐड किए।
Then the next step is to collect data over the specific time period from different sources. Okay, and Sarah, your work is on human capital. So we will discuss that how human capital does economic growth. How does human capital economic growth? So then you just build one model. Okay. Then in the one model, you have to collect data and you have to report that I collected data. This research collected data from WBI over the period 1990 to 2018, and you have to discuss that which estimation techniques, which diagnostic tests you will implement. आप बताएंगे कौन से test आप बताएंगे. ADF test for stationary. So after stationarity test, you must will implement estimation method, maybe some simple OLS according to the conditions. You will follow the method. ERDL method, you have some quantization method, any method you can use. Okay. So in this step, you have to report that which estimation method you use and from which sources your study will collect data. Getting the point? Okay. Good. Hello. What class level? यस बेटा. सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. आवाज अब भी ठीक है? अब ठीक हुई? यस सर. यस बेटा, सम टाइम इश्यू हो जाता है साउंड का. जी बेटा, अब यहाँ पे आप देखिए फॉर कार्बन एमिशन वी हैव यूज्ड स्पेसिफिक मेथड्स. ओके, अब आपने जो ये बताना ना, आप सिंपल टेक्निक्स बता देंगे मैंने कौन सी टेक्निक यूज की है. एस्टिमेशन मेथड आप बताएंगे. ये आपके पास फाइल है ना सायरा एंड जानजेब, आपके पास ये फाइल है ना? यस सर आपने ये फाइल सेंड की थी हमें फर्स्ट डे. तो इसको प्लीज देखें, अपने इसी के मुताबिक आप अपना सर्च रिपोर्ट बनाएं. ओके सर. ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, इसमें मिस्टेक कोई नहीं है, इस तरह चेक किया हुआ है. जी जी, नेक्स्ट बेटा. सर हमने अपना रिसर्च वर्क कब तक सबमिट करवाना है? सर्च वर्क आप कोशिश करें 15 जुलाई तक करवा दें कंप्लीट कर. ओके सर. ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है रिजल्ट्स. आपने रिजल्ट्स कैसे जनरेट करने. फर्स्ट वेरिएबल इकोनॉमिक ग्रोथ है. ठीक है बेटा, इसका एक्सपेक्टेड साइन आपने बता देना है. जो साइन होगा आपने रिपोर्ट में बताना है. ये आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ. इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एग्जांपल कोल कंजम्पशन को पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है. हायर इकोनॉमिक ग्रोथ मीन हायर CO2 इमिशन. तो आप बताएंगे इकोनॉमिक ग्रोथ काजेस positively causes CO2 emission. It means more economic growth leads to
हायर कोल कंजम्पशन, फिर उसकी आप रीजन बताएं। ये आपको टेबल नजर आ रहा है बेटा? आपने टेबल नहीं बनाना, आपने पैराग्राफ की फॉर्म में बता देना है कि दिस वेरिएबल पॉजिटिवली ओके कॉस्ट, सर। सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव कॉस्ट, नेगेटिव कॉस्ट, उसके बाद रीजन बतानी है आपने। ठीक होगी बात? फिर एक बात यहाँ पे मिस है, आपने ये बताना है दिस आउटकम इज सपोर्टेड बाय दिस रिसर्च, दिस ऑथर। फिर आपने अपने आउटकम को सपोर्ट करना है पास्ट स्टडी के साथ। उसके बाद सेकंड वेरिएबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन significantly as significantly caused higher agriculture production significantly caused higher CO2 emissions, that is negative impact or positive impact, जो भी impact हो आपको बता देना है। In other words, आप बताएंगे agriculture production has a significant and positive impact on economic growth. Like higher agriculture production leads to reduce carbon emission in China. China is attempting to produce latest method of seed production that helps to reduce the greenhouse gas. It means अब negative impact क्यों आ रहा है कि China is trying to produce latest method, is trying to use and produce using latest methods of seed production that will help to reduce greenhouse gas emissions. बात पिक्चर है बेटा? देन नेक्स्ट वन सिमिलर, आपके पास सेम मेथड में आप अपने रिजल्ट इंटरप्रेट करने हैं। लाइक coal consumption has positive and significant impact. देन आप बताएंगे इस आउटकम को किस स्टडी ने सपोर्ट किया, रीजन बतानी है आपने। सर ये रीजन उन्होंने बताई कि चाइना नेगेटिव इम्पैक्ट है। रीजन क्या है? बिकॉज चाइना इज ट्राइंग टू प्रोड्यूस लेटेस्ट मेथड्स ऑफ सीड्स production that will help to reduce greenhouse gas. हमारे यहाँ जो मेथड है उसमें क्या है? मोर प्रोडक्शन मोर CO2 emission। और चाइना में क्या है? मोर प्रोडक्शन लेस CO2 emission due to latest seed production that causes to reduce greenhouse gas. Getting the point? वो आपने रीजन बतानी है कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्यों है, और आपकी रिसर्च को सपोर्ट कौन से आर्टिकल्स कर रहे हैं, आप कौन से आर्टिकल में जो आप रिसर्च को सपोर्ट कर रहे हैं। जी बेटा, समझ आ रही है आपको बेटा? यस सर। सिमिलर वे में आपने सारे वेरिएबल, आपके 3 वेरिएबल्स मॉडल में, 4 वेरिएबल में मॉडल में, आपने उन वेरिएबल्स को सेम वे में एक्सप्लेन करना है कि दिस वेरिएबल is showing positive and significant impact on economic growth. Yes, getting the point? सभी वेरिएबल्स को आपने ऐसे एक्सप्लेन करना है। Like this, you have the assignment, you have to discuss in detail, not in the table. In the paragraph, one by one, you have to discuss all variables. Again, listen. This variable has positive or negative impact on emission, because then you have to discuss in detail the reasons. After the reasons, you have to support your results by past studies. This outcome is supported by this study. This outcome is contradicted by this study. Support or contradict
In both ways, you have to discuss your result. Okay. After the discussion of result, you have to give suggestions. Like we find positive impacts forest investment, sorry, for not positive, negative impacts of forest investment on CO2 emissions. Now you have to suggest that the government and private sectors should invest in the forests to reduce CO2 emissions. You can mention here the ways, the projects where forest investments can be helpful to reduce CO2 emissions. जी बेटा ठीक किया आपने पॉइंट को लाइक आपके केस में सायरा के केस में लाइक ह्यूमन कैपिटल आप क्या बताएंगे ह्यूमन पॉजिटिव पॉसिबली आपका आउटकम क्या होंगे ह्यूमन कैपिटल हैज ए पॉजिटिव and significant impact on economic growth because skilled labor रीजन बता रहा हूँ बेटा skilled labor have higher productivity higher productive growth by skilled labor causing higher economic growth in Pakistan. Now you can discuss that this study, this outcome is supported by Umar and Jahanzeb 2017 इसी आर्टिकल में हमने भी सेम आउटकम लिए थे तो आप ये सपोर्ट भी करेंगे कंट्राडिक्शन भी आप बता सकते हैं अगर आपको कंट्राडिक्ट आउटकम मिले तो आप बता सकते हैं दिस आउटकम इज कंट्राडिक्टेड बाय उजैर 2019 now you will suggest that keeping in view the outcome positive you have to suggest according to positivity now privately or yes now you have to suggest that private sectors and public sectors should spend their efforts to uplift labor skills, uplift human capital to increase their productivity, okay, to play a vital role to increase the economic growth. So this one better you can discuss in detail in your work. ये मैंने आपको method बताया. Only one thing is left, that is data and method. We will discuss later, okay? And anything else we will discuss in the next lecture, okay? You can ask any questions. Now I'm going to do stop this here, and you can ask